So, hi everyone, this is Sandhya, and I am starting a YouTube series where I will be explaining about the various government internships that are coming up. There are so many students who want to work in the government sector and they want to get exposure to the government schemes, the policy making and implementation. तो ये सीरीज बहुत हेल्पफुल हो सकती है उनके लिए जिनको गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए. So today I'm starting with Niti Aayog internship. ये internship stands out to be one of the best internships when it comes to working in the government sector and the policy implementation. और आज हम इसी internship के बारे में पढ़ेंगे. तो आज हम जानेंगे कि नीति आयोग की इंटर्नशिप का पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच मीन्स वी विल लर्न अबाउट द एलिजिबिलिटी. इसके लिए अप्लाई करने के लिए प्रोसेस क्या है. जनरली द होल एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन और घर बैठे ही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. देयर आर सर्टेन डोमेन्स एंड एरियाज जिसमें नीति आयोग डिवाइडेड है. इट मीन्स नीति आयोग के बहुत सारे वर्टिकल्स एंड डिविजन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फाइनेंस, बजट. तो अराउंड 25 और 26 domains है currently, and you can apply in any one of them. And we will discuss about some other important information as well. So let's start. So we have about the purpose and objective. Niti Aayog, as I said, is one of the premier institute of our country. पहले ये प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी एंड नाउ इट्स नीति आयोग विच वर्क टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड वेरियस सेक्टर्स जहाँ पे हमारा कंट्री एम कर रहा है. So it provides an opportunity to students like you and everybody to know about the government sector, and they engage the young academic talent who are in their colleges, who are pursuing undergraduate, post graduation, or even if they are research students. They associate them and leverage their skills to contribute them towards the policy formulation of our nation. And here the students work closely with the Niti Aayog's various verticals and divisions. We will learn about what these verticals and divisions are. I'll tell you, I'll provide you the list. Okay. So if we talk about the eligibility, notification जो नीति आयोग ने रिलीज करी है, as per this it says that this internship, this scheme seeks to engage students pursuing undergraduate, graduate, postgraduate degrees or are research scholars enrolled in recognized universities or institutions within India or abroad as interns. तो इसके बाद इट सिंपली सेज कि अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसोर्स कॉलेज अप्लाई कर सकते हैं, बट देर आर ऑल्सो सर्टेन कंडीशंस रिलेटिंग टू योर मार्क्स विच इज़ अटैच टू इट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू कीप इन योर माइंड बिफोर यू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप. तो स्टार्ट करते हैं विद यूजी स्टूडेंट्स एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स वर परस्यूइंग कोर्सेज लाइक BCom, BSc, BA एंड द सिमिलर कोर्सेज. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपका सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज कंप्लीट हो जाए, या एटलीस्ट यू हैव गिवन योर फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम. उसी के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट यू मस्ट हैव नॉट लेस देन 85% ऑफ मार्क्स इन योर 12th क्लास. तो ये दो कंडीशन के साथ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड देयर आर a lot many of people who apply from undergraduations only. Then you have graduate students, for example, the one who are pursuing courses like MCom, MSc, MA, and यहाँ पे कंडीशन है कि आपने अपना एटलीस्ट फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज कंप्लीट कर लिया हो, विच मीन्स या फिर आपने एटलीस्ट सेकेंड सेमेस्टर ऑफ कॉलेज के एग्जाम्स दे दिए हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो. It is not mentioned in notification, but if we look into the other criterias, it certainly says कि यहाँ पे marks की condition जो है वो 70% है, that you should not have less than 70% of your marks in undergraduation. However, this is not explicitly mentioned, but you might keep in this mind and something is not explicitly mentioned as what I said. Then the people who are pursuing research or PhD courses, you can apply for this in any, at any point of time. It is very important that you must have had 70, not less than 70% of your marks in your graduation. इन तीन क्राइटेरियाज के अलावा आई विल टेल यू द अदर टू क्राइटेरियाज विच इज़ ऑल्सो मेंशन इन द नोटिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी अपनी ग्रेजुएशन या PG कंप्लीट करी है. फॉर एग्जाम्पल, यू वर इन MCom और आपने रिसेंटली अपना सेकेंड ईयर का फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम विच इज़ अ फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम फॉर MCom, यू हैव गिवन दैट एग्जाम इन June. Now you are waiting for the result, right? And if you have given this exam, you have a window of 6 months. इसका मतलब है कि उस एग्ज़ाम के 6 महीने बाद तक you can apply for नीति आयोग internship.
Okay, so if you're waiting for admission to higher studies, then you can apply for the PG for the Niti Aayog internship. The condition again is you must have not less than 70% of your marks in your PG, which is MCOM, if I say in this example. So that is the case. So I will read one more point, which is that the period between the month of declaration of result of final exam and the desired month of internship should not exceed 6 months. The 6 months ke under ही you can apply in the case when you have completed your PG courses or graduation courses and you have your results in your hand. And cumulatively it says that 70% marks are important. तो अगर हम जनरल क्राइटेरिया देखें तो आप अंडर ग्रेजुएट में अपने फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम एटलीस्ट आपने दे दिया होना चाहिए. ग्रेजुएशन पीजी कोर्सेज में आपने अपना सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम यू शुड हैव ऑलरेडी completed. In the PhD you can apply at any time. Otherwise there is a 6 months window after which you can apply when you have completed your graduation. And overall if you look into the college you must have 70% or more in your undergraduate and graduation courses. So I think this is a pretty what the summary is that I have given to you of a document which contains a lot more of points. But this is a summary, and you can look into this faithfully. Now, if we look into the application process, uh, the whole process is online. So you can apply for this internship while you're sitting at your home. It is very important where to apply. So Niti Aayog ki internship pe, or you simply if you search on Google Niti Aayog internship, you will get the website and you can apply on it. Also, I have given you the link in the description as well, where you can directly go to the internship management portal of Niti Aayog and you can apply there. Second important point is that you can only apply from the first and 10th, from the first to the 10th date of a month, which means अगर आप अगस्त में अप्लाई करने वाले हैं तो फर्स्ट टू 10th अगस्त में एप्लीकेशन विंडो खुली रहेगी एंड यू कैन अप्लाई देयर एज वेल. But for the next part of that month, the application window will be closed and it will again reopen in the next month. It is very important कि आप एक email ID से सिर्फ एक ही apply कर सकते हो. It is generally um, the thing that हर महीने you cannot apply for a new internship. It means the one application will continue for the long process unless and until you are selected, right? So if you have two email IDs, you can apply from those. But generally it's like the one email ID and you can apply only once. So आप जो भी vertical choose कर रहे हो वो बहुत ध्यान से choose करना है कि आपको कौन से field में काम करना है. We will discuss about this later. So how to fill the form? There is basic details that you have to fill. So I will show you the form. So this is how your portal looks like. This is the internship management portal of Niti Aayog. यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स नेम पेरेंट्स नेम एड्रेस ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर एंड सच इंफॉर्मेशन आपको भरनी है. देन देयर इज एजुकेशन. You have to fill your all information starting from your senior secondary. Senior secondary is actually your 12th standard. The 12th standard और उसके बाद जो भी आपने courses करे हैं UG PG research whatever, you have to put have to give the information about this, the year of joining, completion, whether you are pursuing it or you have completed it, the percentages that you have got, the subjects you have started. यहाँ पे आपको एक मेंशन हो रहा होगा यहाँ पे तो डिजायर्ड मंथ फॉर इंटर्नशिप. हियर यू मेंशन कि आपको कौन से ईयर में और कौन से मंथ में वो इंटर्नशिप करनी है. दे गिव यू दैट ऑप्शन एज वेल टू आस्क. फॉर एग्जांपल इफ आई विश टू डू इट इन द फेब्रुअरी आई विल राइट 2 हियर, right? So if I wish to do it in December 2024 I will write 12 2024, right? So then there is area of internship. This is one of the important point that we should discuss here. So we have discussed these things. We will discuss about the area of interest and resume. So these are the 26 domains that you can see. So amongst all of these 26 domains, for example, like agriculture, economics, education, life, urbanization, social justice and empowerment, science, technology, economics, finance, you have public budget, finance, mining, infrastructure, so many of these सारे 26 domains are crisscrossing across various degrees and professional programs. It is not necessary कि अगर आप बैचलर्स ऑफ कॉमर्स और बीकॉम से हैं then you will only select economics, budget और finance or something related to it. आप कोई भी डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं as per your interest. There is fully a freedom for that and people do apply crossing various domains and areas. So that is one important point. Secondly,
The point that I wish to mention is that there's so many domains, and it is mentioned in the notification that they will hire maximum 3 interns per vertical. But obviously, it is mentioned that there might be, it depends upon the discretion of the head. They might have more or less of them depending upon the vacancies. So आपको आपकी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सा वर्टिकल करंटली ज़्यादा लोगों को हायर कर रहा है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, और जो मैंने रिसर्च करी है, हैव बीन टू लिंक्डइन, हैव टॉक टू सो मेनी पीपल हु हैव completed their internship at नीति आयोग, and at least they are selected for it. I think I have research about, for example, social justice and empowerment vertical, economics and finance, agriculture, ADP, which is aspirational district program, governance and research. ये कुछ verticals है जो currently एक good pace पे hire कर रहे हैं, but again I will not give a surety over this. You have to do your own research over this, and more importantly, you will have to choose your area of interest. It doesn't mean that if you know nothing about economics, but it is hiring people, so you will choose for it. Again, it depends upon your skills as well, it depends upon your knowledge as well, as to which vertical you want to choose. So be cautious over this. दिस इज़ बिकॉज़ आप जब भी अप्लाई करेंगे इंटर्नशिप के लिए, आप एक ईमेल आईडी उसमें जब डाल देंगे, सो दैट विल कीप ऑन गोइंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, राइट? इट मीन्स दैट यू कैन नॉट चेंज दैट वर्टिकल. आप नेक्स्ट मंथ उसी ईमेल आईडी से दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दूसरा वर्टिकल चूज़ नहीं कर सकते हैं. यू हैव दैट एप्लीकेशन विल कीप ऑन गोइंग. सो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट you fill. Be mindful of your skills, your background, your interest, as well as the vertical that are hiring currently at a good pace. ऑल राइट. सो डोमेन हमने डिस्कस कर लिया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस कर लिया. एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नोटिस कि हमें एप्लीकेशन में अपना रिज्यूमे और सीवी अटैच करना है. ये सीवी जो है, इसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम योर एजुकेशन बैकग्राउंड टू योर वर्क एक्सपीरियंस, अदर इंटर्नशिप्स, योर स्किल्स, योर पोजिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप सब मैंशन कर सकते हो. सो इफ़ यू वॉन्ट मी टू शेयर सम information about how to make a CV, or from basic or to advanced level, and how to present all the information, what all we should include, I would be very happy to help you. So please comment down that if you need the same. I will do make a video on that as well. So we have another very important information, that all the selected candidates, हो सकता है उन्हें बोला जाए कि उन्हें अपने कॉलेज से एनओसी सबमिट करना है फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंसिपल. एनओसी क्या है? इट इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो एक सिंपल सर्टिफिकेट है जो मेंशन करता है दैट यू आर अ बोनाफाइड स्टूडेंट, और कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी इंटर्नशिप करने से एट नीति आयोग. सो दिस इज सिंपली, यू कैन गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन, you can get it signed. आप पूछ सकते हैं. दिस NOC comes into the picture and into the play only after you are selected. टिल देन एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल है. आपको आपकी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और आपका CV अपलोड करना है. ये चीज़ें आप कर दोगे, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी. Now, I also wish to give you some other information which are very important. Number one, this Niti Aayog internship is an unpaid internship. So please do not expect any reimbursement or remuneration, anything in return. Secondly, you will have to maintain a 75% attendance. बट डू नॉट वरी, ये 75% अटेंडेंस आपके कॉलेज की नहीं है. दिस इज़ बेसिकली अटेंडेंस फॉर द नीति आयोग इंटर्नशिप. तो आप जब भी कोई भी काम या रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है, वट एवर ऑल द वर्क्स आर, ऑल द वर्किंग डेज आर, आपको 75% ऑफ टाइम यू हैव टू बी देयर. ये नोटिफिकेशन में लिखा है दैट दिस अटेंडेंस इज कंपल्सरी, और इफ इट इज़ लेस देन दैट, कुछ strict action या repercussions can be there. Again, it depends from case to case basis, but this is what it is written in the notification. About the period of internship, this internship is for at least 6 weeks, but it will not exceed 6 months. So whatever I have seen in the LinkedIn's, or have been into contact with the people who have had completed their internship, generally abhi 6 weeks की internships ही हो रही हैं. So you can keep these things in your mind. uh, and that's it. I think these was the information that I wish to give you regarding Niti Aayog internship. This internship is from a very premier institute in Delhi, and you get a lot of exposure to the government working. You get to enhance your skills, as well as government internship like these attach a lot of value to your CV if you go for any placements or anything. So I wish you all the best.
please do apply. This is July, and in August, from 1st to 10th of August, and in subsequent months, the application window will open and you can apply for the same. आप पहले से अपना resume प्रिपेयर कर सकते हो जो भी अभी टाइम बचा है, and right when the application window start you can apply for that. So all the best for your application process. And this is my first video on YouTube regarding the government internship. I would love to get a feedback from you, or if you have any more queries, I would be very happy to share them and answer them in the comment section, or I will make a separate video on that. I will let you know. So, any information, any feedback, any query, you can write down in the comment section. And again, this is the first video. I would like, if you love the content, you can please like, share, as well as subscribe the channel and follow for more such contents as well. Thank you so much. Bye. Okay.